Welcome back to our discussion of metric spaces. In this lecture, we are going to discuss connectedness of a metric space. कब हम एक metric space को connected बोलेंगे, इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम कनेक्टेडनेस की डेफिनेशन, कुछ फैमिलियर एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे. In the continuation of this particular content, in the next video, we are going to discuss connectedness along with the continuous mapping. Okay, so let us start this discussion by writing the definition of connectedness. Okay, definition, and this definition is going to be defined when a metric space is disconnected. Okay, disconnected metric space. Before going to this definition, let me tell you connectedness का मीनिंग क्या है. जब भी हमारे पास कोई ऐसा सेट हो जो कि एक ही पीस में है, या फिर हम ऐसे कहें कि उसके अंदर ऐसे कोई दो पर्टिकुलर सबसेट्स नहीं हैं जो कि आपस में सेपरेटेड है, और जब हम उनका यूनियन करें तो पूरा का पूरा हमें सेट ही मिल जाए. जैसे कि अगर मैं रियल लाइन पर बात करूं, जैसे ये रियल लाइन है, हमने एक इंटरवल यहाँ पर ओपन इंटरवल लिया, सपोज दिस इज 1,2, और फिर हमने दूसरा इंटरवल डिफाइन किया 2,3. सो हम इन दोनों इंटरवल्स को मिला के अगर इंटरवल की बात करें 1,3, तो आप क्या कहेंगे कि इसके अंदर हमारे पास ये एक पॉइंट है 2, दैट इज नॉट इन दिस, नाइदर इन दिस 1,2 और नॉर इन 2,3. इसका मतलब अगर हम इन दोनों इंटरवल्स का यूनियन लें, दैट इज 1,2 यूनियन ओपन इंटरवल 2,3, तो इसका ये जो यूनियन रिजल्टेंट सेट हमें मिलेगा दैट विल बी डिसकनेक्टेड. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि इनको कनेक्ट नहीं होने दे रहा है. ठीक है, या फिर हम कहें कि ये जो पूरा सेट है ना, जिसमें हमने यूनियन की बात की है 1,2 एंड 2,3 ओपन इंटरवल्स के यूनियन की बात की है, वो एक सिंगल पीस में नहीं है. इसके अंदर हमारे पास एक सेपरेटेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है. इसलिए ये जो यूनियन बनेगा इन दोनों का, दैट विल बी नॉट अ कनेक्टेड सेट. ओके, अब अगर हम इनके अलावा रियल लाइन में किसी भी इंटरवल की बात करें, तो आप देख पाएंगे चाहे ओपन इंटरवल हो, क्लोज्ड हो, या सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हो, तो उस केस में आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, हम फ्रॉम दिस एंड पॉइंट टू दिस एंड पॉइंट हमेशा वॉक कर सकते हैं विदाउट लीविंग दिस सेट, राइट. तो हम अगर पूरे सेट में इस तरीके से घूम पाएँ जिससे कि हम सेट से बाहर ना जाएं, तो उस केस में हमारा सेट एक कनेक्टेड सेट होता है. ओके, इसी तरीके से सपोज हमारे पास कोई ऐसा सेट है, अब हम आर स्क्वायर में बात करते हैं. ठीक है, हमने एक सर्कल की बात की. ओके, तो मैं सर्कल के इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक इस किसी भी तरीके से घूम सकता हूँ. बस इसमें हमें इस घूमने के दौरान इस सेट को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. इसका मतलब ये जो पूरा एंटायर सेट है, दिस इज इन वन पीस. ओके, अगर मैं बात करूँ इस सेट की, जैसे हमने ये लिया और ये है ना, इसके अंदर ये वाला इंक्लूड नहीं है, केवल ये वाला पार्ट हमारा सेट है. तो इसमें भी आप देख सकते हैं हम कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं इस सेट के अंदर विदाउट लीविंग दिस सेट. ओके, तो ये भी एक कनेक्टेड सेट है. तो आई होप यू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टेड सेट इन अ नॉर्मल और इन अ सिंपल वर्ड. ओके, इसी तरीके से आप, जैसे हमने यहाँ पर दो यूनियन लिया है दो ओपन इंटरवल्स का, आप किन्हीं भी दो ओपन इंटरवल का यूनियन लेंगे वो हमेशा डिसकनेक्टेड काइंड स्ट्रक्चर ही रहेगा, क्योंकि उसमें जो भी यहाँ पर हमें पॉइंट्स मिलेंगे, चाहे वो सेपरेटेड हो या फिर ये कॉमन पॉइंट हो या नहीं हो, हमेशा हमें एक सेपरेशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा. ओके, तो आसान भाषा में कनेक्टेडनेस का मीनिंग ये है कि हम पूरे सेट में विदाउट लीविंग दिस सेट अगर हम घूम पा रहे हैं तो वो सेट कनेक्टेड सेट है. ठीक है, जैसे अगर हमें इस यूनियन में घूमना है, तो इस यूनियन में जैसे ही हम 1 से लेके 2 तक आएंगे, फिर 2 से आगे नहीं जा पाएंगे, राइट. 2 पर पहुंच नहीं पाएंगे और इसमें 2 से स्टार्ट नहीं कर सकते.
इसका मतलब कहीं ना कहीं वी डू नॉट हैव अ पाथ टू walk along this line from these point 1 and 3. Okay, so that's why we are calling this is a separate kind of a structure, and hence this is disconnected set. Okay, so now we are going to write the definition of disconnected metric space, and then on the basis of this definition we will define the connected metric space. Okay, so a metric space x comma d is said to be disconnected if there exist two non-empty subsets A and B of the non-empty set X such that we are having two conditions for these two non-empty subsets. First is about that if we take the union of these two non-empty set, then it must be the whole set. That is, इसका मीनिंग क्या है? That is, if we identify these kind of subsets, the subsets must be non-empty and together they must constitute the whole space. Okay, then the second condition is that if we take the intersection of A with the closure of B, that must be phi, and if we take the intersection of A closure with the set B, this should be also phi. इसका मतलब A के एलिमेंट या फिर इसका कोई भी लिमिट पॉइंट B के या फिर B के लिमिट पॉइंट के साथ नहीं होना चाहिए. ओके, तो केवल सेट के साथ ही हमें इंटरसेक्शन नहीं देखना है, बल्कि सेट के लिमिट पॉइंट के साथ भी इंटरसेक्शन देखना है. ओके, इसका क्या मीनिंग हुआ कि ना तो B का कोई एलिमेंट A में होना चाहिए और ना ही B का कोई लिमिट पॉइंट A में होना चाहिए. ओके, एंड सेम थिंग ट्रू फॉर A कि A का कोई भी एलिमेंट B में नहीं होना चाहिए और A का कोई भी लिमिट पॉइंट भी B में नहीं होना चाहिए. ओके, तो दोनों सेट के लिए हम क्या कह सकते हैं? That is, neither may contain a point of the closure of the other. Okay, so this is about the definition of डिसकनेक्टेडनेस. अगर किसी भी मैट्रिक स्पेस में ऐसे कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस केस में वी विल कॉल दिस एक्स एज अ डिसकनेक्टेड मैट्रिक स्पेस. अब अगर किसी भी मैट्रिक स्पेस के लिए ऐसे नॉन एम्प्टी सेट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में वी विल कॉल दैट मैट्रिक स्पेस एज अ कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस. ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस. ओके, अब अगर आपके एग्जाम में कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पूछे तो यू विल राइट फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ डिसकनेक्टेड मैट्रिक स्पेस एंड देन डिफाइन द कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस लाइक दिस. इफ नो सच non-empty subsets of X exist, then X is said to be
said to be connected metric space. ओके, सो कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पूछे तब भी आप डिसकनेक्टेड मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन लिखेंगे एंड देन यू विल राइट दैट इफ नो सच non-empty subsets of X exist, then X is said to be connected metric space. Now, in the set of real numbers, we are going to identify some disconnected and connected sets. So, let us look at the beauty of connectedness. So we are having examples 4.1.2. First, it says let X is the set where X is coming from R such that we have this condition on X that X is greater than equals to -1 is strictly less than 0, and or we have that this X is strictly greater than 0 and less than equals to 1. Okay, then X is disconnected subset of R. ओके, सो इसको हम कैसे देख सकते हैं? In fact, we can say that in fact the given set X can be seen as, now we can write ये जो कंडीशन है x पे, दिस रिप्रेजेंट कि x हमारा क्लोज -1 कोमा ओपन 0 इंटरवल से बिलोंग करे, और ये हमें बता रहा है कि ओपन 0 कोमा क्लोज्ड 1 इंटरवल से x बिलोंग करे, और हियर वी हैव द वर्ड और, इसका मतलब इससे भी बिलोंग कर सकता है और इससे भी बिलोंग कर सकता है, तो वी नीड टू टेक इन दैट सेंस यूनियन. ओके, सो वी कैन सी दैट x is equals to A union B, where A is the close interval 1 comma open 0 and B is open 0 to closed 1. Okay, it is -1. Now you can see अगर हम इसको रियल लाइन पर देखें, suppose this is our real line and this point is 0, and suppose somewhere this is -1 and this point is 1, then we need to include this -1, then exclude 0, then include +1. Okay, now look at the set. If we want to travel from -1 to 1, or we want to travel within this set, then we will गो आउटसाइड फ्रॉम दिस सेट, क्योंकि जैसे ही हम चलते चलते इस पर 0 पर पहुंचेंगे तो 0 हमारे इस x का पार्ट नहीं है. ओके, तो अगर इसको आप ध्यान से समझेंगे तो हम यहाँ से चले -1 से ये आए हम लोग 0 पे, और यहाँ पर ये वाला स्पेस खाली है अपने पास. ओके, और फिर हम आ गए हैं 1 पर. इसका मतलब अगर हम यहाँ से इस तरफ ट्रेवल करें तो यहाँ आते ही वी नीड टू जंप. ओके, और जब जंप कर रहे हैं इसका मतलब हमने इस रियल लाइन को छोड़ दिया है, इससे बाहर आ चुके हैं. एंड व्हेन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, इसका मतलब ये जो x है दैट इज डिसकनेक्टेड मैट्रिक स्पेस. ओके, ये अब हमें फील आ रहा है, बट फ्रॉम द डेफिनेशन हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक डिसकनेक्टेड मैट्रिक स्पेस है? ओके, सो हियर यू कैन सी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिसकनेक्टेड मैट्रिक स्पेस विद द मस्ट कंडीशन इज दैट कि हमारे पास दो ऐसे नॉन एम्प्टी सबसेट होने चाहिए कि इनका यूनियन पूरा का पूरा गिवन स्पेस बन जाए. सो फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द ए बार? ओके, हियर ए बार is equals to -1 to 0, right? And B bar is equals to close 0 to 1. Then what about A intersection B bar? A intersection B bar means
that is same as close -1 comma open 0 intersection b bar that is 0 comma 1. तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन है phi, right? And a bar intersection b that is -1 comma 0 intersection with open 0 comma 1, and obviously this is also phi. So we have to non-empty subset of x such that x can be written as a union of these two non-empty set, and moreover these two conditions are also satisfied by these two non-empty set. Okay, thus x is disconnected metric space. Okay, so this is about some connected or disconnected subset on R. Now come to the next example. Suppose we are considering that the rationals Q, which are subset of R, with the metric induced from R, मतलब यूजुअल मेट्रिक का अगर हम Q पर रेस्ट्रिक्शन कर दें, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. R not connect. Okay, कैसे? If we want to see this, you can assume any two subset जिनके limit point irrational number. Okay, so आप irrational number को जानते हैं. We can consider square root of 2, square root of 3, or any square root of p where p is prime. Okay, so you can consider like, then let us choose square root of 2, है ना. आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी चूज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ p भी चूज कर सकते हैं. आप इस तरीके से ही प्रोसीड करना है. देन we can have that a subset x, that is x belongs to Q such that x is strictly less than square root of Q, and we are considering b that x belongs to Q such that x is greater than square root of 2. Okay, so अगर हम इसको रियल लाइन पर देखें, let me draw the real line. Suppose this is our real line. Okay, और ये हमारा रैशनल नंबर है. This is 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, and ये है -1, -2, -3 एंड सो. ये जितने भी ग्रीन्स में लिख रहा हूँ वो सारे रैशनल नंबर है. तो हमें पता है कि ये सभी इस तरीके से होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर. ये सभी जो भी आपको ग्रीन दिख रहा है इस पे, वो सभी रैशनल्स है, और जो भी आपको रेड दिख रहा है वो सभी इरेशनल है. ठीक है, तो हम वैसे इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि हाँ इस रैशनल के बाद ये इरेशनल है, ऐसे हम नहीं पता कर सकते. ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग, ये जो है ये वाली लाइन ये डिनोट कर रही है इरेशनल को. ओके, और जो ग्रीन लाइन्स है वो डिनोट कर रही है रैशनल. ठीक, अब हमें जो गिवन है वो है कि स्क्वायर रूट, सपोज दिस इज आर स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड यहाँ से ये यहाँ तक के जो नंबर्स है वी आर कमिंग फ्रॉम दिस वे, एंड वी आर सेइंग कि इधर से आते हुए हम जब यहाँ पर पहुँच रहे हैं till this point, not including this point, then
इतने लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी पॉइंट है उनको, और राइट हैंड साइड के जितने भी पॉइंट है उन सबको हमने काउंट करना है। ओके, काउंट इन द सेंस उनका कलेक्शन लेना है। तो हमने ये नहीं कहा कि हमें वो सारे रैशनल्स चाहिए जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कम है, और वो सारे इर्रेशनल चाहिए जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हमने सारे के सारे रैशनल को ही कलेक्ट नहीं कर लिया? ओके, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सक्लूजन है वो तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे इस क्यू का पार्ट नहीं है। इसका मतलब इस वाले कलेक्शन को कंस्ट्रक्ट करते समय जो पॉइंट हमसे स्किप हो रहा है वो पॉइंट केवल स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये जो गोल्डन लाइन है दैट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर फ्रॉम दिस रियल लाइन। ओके, so let me write, then clearly we can say Q is the union of A and B. And what about A bar? A bar का मीनिंग क्या होगा? This square root of 2 is a limit point of this set A, and square root of 2 is also a limit point of B, right? So you can see basically A और B दोनों disjoint set हैं, और इनके लिमिट पॉइंट की अगर हम बात करें then we will have that. And what about A bar? That is x belongs to R, क्योंकि रैशनल के तो रियल नंबर भी होते हैं, सच दैट x is less than equals to square root of 2. This is the set of all limit point along with the elements of A. Okay, and B bar is x बिलोंग्स, अब हमें केवल रैशनल्स नहीं कलेक्ट करने हैं, हमें सारे के सारे a और b बार के पॉइंट्स और उनके लिमिट पॉइंट कंसिडर करने हैं। हमें पता है रैशनल नंबर के लिए हर एक इरेशनल नंबर एक लिमिट पॉइंट है, और हर एक इरेशनल नंबर के लिए रैशनल नंबर एक लिमिट पॉइंट है, राइट? बेसिकली इस q के लिए पूरा का पूरा r ही लिमिट पॉइंट होता है, वी नो दैट, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, देन व्हाट अबाउट a? Thus, what about A intersection B bar? So A intersection B bar मतलब A हमें यहाँ तक आना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, जैसे कि अगर हम कहें ये लाइन स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो हमें बस यहाँ तक पहुँचना है। We must have some point between this last point and then square root of 2. Okay, so we can say this is equals to 5, and obviously a bar intersection b is equals to also 5. So we have to a and b are non-empty and they are disjoint set, और डिसजॉइंट होने के साथ साथ यू कैन सी कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, देयरफॉर वी कैन से दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिस्कनेक्टेड। ओके, हेंस q is disconnected। ठीक है, so this is how you can verify for any kind of subset by identifying these kind of subsets। Okay,